वैल्यू देखने के लिए ऊपर चलते हैं। नॉर्थ डकोटा 945 फॉर एवरी 10,000 and California is 235 for every 10,000, right? So North Dakota का job growth है 945 for 10,000. 1, 2, 3, 4, 10,000 over this ratio with job growth for California 235 for 10,000. बोलो चारों, लिए समझ में आ रहा जो मैंने किया? So 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया. This becomes 945 upon 235. अब अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 945,000 कर लेते हैं ऊपर की तरफ, 235 200 कर या 250 कर लेते हैं. So this is more close to 4:1. हाँ, आंसर इज ऑप्शन डी. चारुल, ठीक है, नो वरीज. सो वी गो बैक. अच्छा, मैंने खारगर को कर दिया है. एक मिनट, रिप्लेस माय पीपीटी and we go to bar graphs. I want you to solve this particular problem. It's not there in your book, तो आपको ये स्क्रीन पे सॉल्व करना पड़ेगा. बार ग्राफ में सेम, ये this is histogram, this is real SAT problem. Number of seeds in each of 12 apples. Y-axis number of apples, x-axis number of seeds based on the histogram above. Of the following, which is closest to the average, which is arithmetic mean, number of seeds per apple is what they are asking. अगर हम अब देखें, so it's not about me teaching you histogram, but it's about application. So साथ में करते हैं. Based on this, what is the average number of seeds per apple? So guys, if I look into this, अच्छा ये करना भी चालू कर दिया आप लोगों ने. Great. So I've got some answers. Let me do this. There are 2 apples. Look at this, 2 apples with 3 seeds. So total 6 seeds here, because this is 2 into 3. I have 4 apples with 5 seeds, 20 seeds coming from here. I have 1 apple with 6 seeds, so 6 seeds coming from here. 2 apple with 7 seeds, 14 seeds यहाँ से आ गए. कुछ है नहीं. 9 apples, 3 apples with 9 seeds, so 27 seeds यहाँ से आ गए. Now let me add. So 20 and 20, 40, this is 46, 46 and 27 will be 73, if I am correct. So I have 73 seeds. Number of apples that I have, वो तो दिया हुआ ही है, 12, ये दिया हुआ है यहाँ पे, 12 apples. So 73 divided by 12. अगर ये 72 होता तो 12 6 72. So answer is option C. This is histogram for you. So एक क्वेश्चन करते हैं इस पे and then I will move on. This is also a real SAT problem. Let's solve this. Let me give you 90 seconds. Energy sources x-axis and उनका consumption in quadrillion BTU, British Thermal Unit, y-axis. Of the following, which best approximates the percent decrease in consumption of wood power in United States from 2000 to 2010? ये साथ में कर लेते हैं, चलो. So consumption of wood. Let's come down to woods. Wood में this is 2.25. If I look at the graph, this is 2.25, and this part is 2.
So wood consumption have gone down from 2.25 to 2. ये याद रखना एक छोटा सा. It has gone down. So if it has gone down, they want percentage decrease. Percentage decrease, there's a direct formula for percentage decrease. The formula is like this. Percent decrease, let me use sketch pen only. Percentage decrease is equal to new value minus the old value upon the old value into 100. Rather ये percentage decrease नहीं, ये percentage change का formula है. ये percentage change का formula है. New value minus old value upon old value into 100. Let's do this. New value 2 BTU minus the old value 2.25 BTU divided by 2.25 BTU into 100. ये आता है negative 0.25. Negative is telling me that there is a decrease. Wood में there is a decrease. That's all. Upon 2.25 into 100. तो ये देखने से लग रहा है this is 1/9 into 100. 1/9 is a percentage. 11.11 percentage. This is the answer. This is percentage decrease. ये negative sign को भूलना मत. This says that there is a decrease in consumption. Okay, guys. That's all. ये simply solve हो गया. 11%. Answer is option B. किसी ने मेरे साथ share भी किया है? नहीं. 6 नहीं. 11. Caleb, is this okay? So ये this particular formula that we have just seen, this is about percentage change. अगर ये positive आता तो percentage increase होता. ये negative आ गया numerator, मतलब there is decrease. That's all. So remember this. You can apply this in any and every scenario. नीचे हमेशा ओल्ड वैल्यू होगा बिकॉज ओल्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करोगे. सो डिफरेंस अपॉन द बेस व्हिच इज ऑलवेज ओल्ड वैल्यू. ओके गाइस, लेट्स गो अहेड. रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सो गैलरी में स्पॉटलाइट. I'll take two more important topics, and these topics are related to. I just hide this and go to gallery. I'll take two more topics. This is related to range, standard deviation, and box and whisker plot. ये जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का बेस बनेगा whatever we are discussing right now. So first we come down to range and standard deviation. Now how it happens, we are doing statistics. Next class is also about statistics only, whenever we do chapter 9, and I'll continue from where I leave today. So in a given data set, range of data set is defined by difference of extreme. कहने का मतलब, if I take a test of this class, let's say, and out of 20 points, highest marks are 20 and lowest is, let's say, 12. Then the range of score for this class is calculated as high minus low, 20 minus 12, which is 8. So range of data set is highest value minus the lowest value. Range of data set is given by, तो range क्या होता है ये बस याद रखो. Range of data set is the highest value you have in that data set minus the lowest value or the lowest point in that data set is called as range. Coming down to standard deviation, ये हम लोग बहुत बार क्लास में ये वाला एग्जाम्पल करते हैं. अगर आपने पहले मेरे साथ ये पढ़ा है तो आपने किया होगा. Where I try and make you understand what is standard deviation. T-I-O-N, is it D-E-V-I-A-T-I-O-N? Deviation. Yeah, T-A-T-I-O-N. This should be T-A-T-I-O-N, I think. So standard deviation में the focus is deviation. Deviation from what? Deviation from what? Deviation from central tendency. So one of the tools to measure central tendency of any data is average. मीन जिसको आप बोलते हो. तो किसी कोई डेटा का मीन है,
हमारा जो डेटा सेट है वो मीन के अक्रॉस कितना स्प्रेड है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल गाइस. स्टैंडर्ड डिविएशन मींस वेरिएबिलिटी इन डेटा. मेरा डेटा कितना वेरिएबल है, कितना स्प्रेडेड है. द स्प्रेड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन. सो लेट मी पिक एक छोटा सा एग्जांपल पिक करते हैं. अब जो मैं हमेशा बोलता हूं. सो सानवी भास्कर, लेट्स पिक सम इंस्टीट्यूशन. कोई भी एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का या फॉरेन का बताओ. बोलो सानवी. सानवी इज फ्रोजन. नहीं है. बोलो सानवी. गिव मी नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूट इन इंडिया और अब्रॉड फॉर इंजीनियरिंग. आईआईटी. ठीक है. तो आईआईटी कौन सा आईआईटी? लेट्स से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे लेते हैं और एक लेते हैं आईआईटी दिल्ली, क्योंकि तुम आईआईटी की तैयारी कर रही हो. अगर किसी को फॉरेन का ही करना है तो लेट्स से एमआईटी वर्सेस स्टैनफोर्ड. ओके. ये ऐसा समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से ये हम केस बिल्ड कर रहे हैं. यहाँ पे ही मैंने पहले भी किया होगा क्लास में. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 100 एडमिशंस इन बोथ द इंस्टीट्यूशंस इन ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. लेट्स से बोथ एक्सेप्ट, ये कोई भी इंस्टीट्यूट दे एक्सेप्ट एसएटी स्कोर, and I am plotting the SAT score, highest being 1600 and the lowest score जो MIT IIT बॉम्बे में एडमिट हुआ is 1420 is 14. Similarly second case में स्टैनफोर्ड में 1600 हाईएस्ट स्कोर था, जो लोअर स्कोर पे आया that was 1380. So if you look at range of data, range for MIT was, range क्या होगा MIT का? बोलो. 180. 180. And range for Stanford? 220. 220 is the range. 100 students का हमने डेटा प्लॉट किया and I also calculated their mean. Mean for MIT was let's say 14 and ये 180 लेते हैं तो let's say it was something like 1550 इसका मीन था और इसका हमने मीन लिया तो let's say 1500 मीन था. Mean means the average value. So when I was plotting, मैंने एक एक ही 100 डॉट्स को प्लॉट किया. So कुछ बच्चे यहाँ पे थे, 3 बच्चे. Then there were some here, then there were some here, then there were some here. कुछ बच्चे यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ बच्चे थे. Let's say these are 100 dots, each dot representing a given student's score. Similarly, I did for Stanford. There were some students here, there were some students here. ये कुछ बच्चे थे यहाँ पे. So, you know, in SAT, they will never ask you to find standard deviation. उसका फॉर्मूला वो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, x बार माइनस x और उसका स्क्वायर एंड ऑल दैट. बट दे विल आस्क यू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ डिविएशन इन माय डेटा, deviation in my data, this should tell you that deviation from what? Deviation from mean. How spread is my data or how compact is my data? So if I look at this across mean, अगर आप देखोगे MIT में तो आप ये देखोगे that there is the data is more compact around the mean in MIT, whereas in Stanford डेटा जो है अक्रॉस मीन स्प्रेडेड है, ज्यादा स्प्रेडेड है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि आपको स्प्रेड पढ़ना है या वेरिएबिलिटी पढ़ना है. सो इफ यू लुक इनटू द वेरिएबिलिटी, दिस इज लेस वेरिएबल, डेटा इज मोर कॉम्पैक्ट अराउंड द मीन एंड लेसर as you move far from the mean, whereas in Stanford data is equally spreaded across the mean
and it is not so much only around the mean. Hence, standard deviation of IIT Delhi, yeah, Stanford ही लेके चलते हैं. Stanford will be more than standard deviation for MIT. So standard deviation means how variable is my data. Standard deviation means how spreaded is my data across mean. Okay, higher the spread, higher the standard deviation. Lower the spread, more compact my data, lesser would be the standard deviation. तो जनरली ये कंपैरिजन या इन्फ्रेंस करने निकालने के लिए आ सकता है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कितना मेरा डेटा स्प्रेडेड है, फैला हुआ है अक्रॉस पॉपुलेशन मीन, अक्रॉस जो भी डेटा सेट मुझे दिया है, सैंपल पॉपुलेशन दिया है, उसके मीन के अक्रॉस वो कितना कॉम्पैक्ट है या स्प्रेडेड है. हायर द स्प्रेड, हायर द वेरिएबिलिटी, हायर स्टैंडर्ड डिविएशन. लोअर स्प्रेड, लोअर वेरिएबिलिटी, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन. बोलो, एम आई मेकिंग सेंस हियर? ये समझ में आया आपको? केसर पाटिल? So this is about standard deviation. एक ये concept है. I'll do one more concept which is related to box and whisker plot, and then we will go ahead. So you guys will have to help me. What do you mean by percentile? Anybody? Percentile का क्या मतलब होता है? Percentage नहीं, percentile. What does this mean? बोलो बोलो, I am waiting. What does this mean? Percentile. Percentile rank. People get percentile rank. No idea. Sanvi, you must be knowing. IIT में तो percentile rank ही आता है. IIT main जब लोगे तुम तो उसमें percentile rank आएगा. Sir, I know that it's in the range of like, let's say 90th percentile or 70th percentile, but I'm not sure of the exact meaning. So what do you mean by 98th percentile? चलो इसका मतलब बताओ. 98th percentile. Means out of all these students, you rank in the 98th. You are like accordingly in that position. Okay. So let me try and help you guys. Percentile, basically guys, at the most fundamental level in statistics, you know, percentile concept is used to segregate the data, to create class in data, to categorize the data. Data को किसी particular category में बांटने के लिए, divide करने के लिए percentile का use होता है at most fundamental level. हमको data को बांटना है, create करने clusters. Clustering of data के लिए मैं percentile use करता हूँ. तो there are 10 lakh people, Sanvi, who are writing IIT exam or CA foundation exam or CLAT law exam or SAT exam. अब मुझे उनको कैटेगराइज करना है कि ये मेरे टॉप स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे टॉप से सेकंड टॉप स्टूडेंट हैं, ये मेरे बॉटम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनका क्लस्टर बना रहा हूं. दैट्स व्हाट परसेंटाइल मींस. आई एम क्रिएटिंग क्लस्टर. सो लेट मी गो बैक. So when I say percentile, it basically means, let's say this is my total unit. Let's say this is my total unit. Percent, cent means 100. What I have done is, मैंने इस total unit को 100 equal units में divide किया. 1, 2, 3, 4, 100 equal units, and this is my 100th unit. So I have divided the entire data set in 100 equal units, which means each unit is representing 1% of the data. अगर total, let's say 10,000 data था, तो इसका 1% will be 100. 100 units के मैंने 100 units बना दिए. 100 data points के 100 unit बना दिए. Where each unit has same number of data, equal number of data, and they are representing 1% of total data.
बोलो, am I making sense? And I've arranged them in some order. यहाँ पे marks के order में arrange किया, and I am calling them as percentile. So if somebody is at 98 percentile, इसका ये मतलब है कि उस population में, उस data set में जो बच्चा 98 percentile है, इसके ऊपर 2% of data है, इस बच्चे के ऊपर 2% data है, 2% students हैं, इसके नीचे 98% जनता है. If somebody is getting 99 percentile in an examination, this means of the total test takers, there are 1% students who are above this student and 99% students are below this student. बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या ये सब जो मैंने किया? सारा दास, is it clear? So this is percentile for you. Breaking the data in 100 equal parts, where each part is representing 1 percentile. So if somebody is at 80 percentile, it means total test takers का 20% लोग उससे ऊपर हैं, 80% उसके नीचे हैं. Let me look at you guys first. मुझे देखने दो, ये सब समझ में आया. सानवी भास्कर, समझ में आ गया? निष्ठा? Okay, चारुल? So this is concept of percentile. ये समझना जरूरी है क्योंकि हम कुछ और build कर रहे हैं. If this is percentile, my question to you is now. My question to you is now, can you define quartile for me? इसी logic से मेरे लिए quartile. अच्छा, the good or bad news is SAT में percentile नहीं आता है, quartile आता है. स्टैटिस्टिक्स का क्वार्टाइल आता है, परसेंटाइल नहीं आता है, बट बस नाम चेंज हुआ है. अब आप मुझे इससे बता सकते हो क्या क्वार्टाइल क्या होता है? कैन यू टेक अ गेस? Each of 4 groups. हाँ. So I'll have a data set. This is my total data set, and I'm dividing it into how many parts? How many equal parts? 4 equal parts. With each part representing how much data? 25% data. इसको बोलते हैं क्वार्टाइल, क्वार्टर. So this is top 25%. ये उसके बाद वाला 25%. This is उसके बाद वाला next 25%, and this is bottom 25%. So if I have 100 people, this is top 25%, 25 people, then next 25 people, then next 25 people, next 25 people. This could be marks of people, income, weight, hair loss, anything, criminal cases against these people. So you have data and you are dividing this data into 4 equal parts, and your 4 equal parts, each part is representing 25% of that data. Of course, किसी order में आपने उसको arrange किया. Quartile. बोलिए, ये समझ में आ गया? ओके. अगर ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दो. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? ये सबको मैं टाई अप कर दूंगा अभी, डोंट वरी. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? एनीबॉडी? प्लीज डिफाइन मीडियन फॉर मी. सारा, व्हाई डोंट यू ट्राई? हाँ, केसर, गो अहेड, बोलो केसर. Middle value of the data given is not wrong but is incomplete, so I cannot accept it. Incomplete है, कुछ मिस कर गए आप. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे middle value, but this is incomplete. Can anybody improve this? data given in a specific sort, specific order. Okay, so ordered data मतलब arranged होना चाहिए data. Ordered data का middle value. So data could be arranged in some fashion, ascending order, descending order, whatever. Arrange that data first and then find the middle value. है ना चारुल? आगे बढ़ सकते हैं? So median means you'll have to arrange data in some order, either ascending or descending, whatever you want to.
असेंडिंग और डिसेंडिंग, अरेंज इट एंड उसका मिडिल वाला वैल्यू ले लो. दिस इज मीडियन. तो अब हम लोग ये क्वार्टाइल को मीडियन से जोड़ने की कोशिश करते हैं. तो ये जो क्वार्टाइल है ना, इसको घुमा के रख देता हूं मैं, ऐसे रख देता हूं इसको. वर्टिकल नहीं रख के हॉरिजॉन्टल रखा और इसके 4 हिस्से कर दिए. इक्वल मान लो, ये इक्वल दिख नहीं रहा है, प्लीज अज्यूम देम टू कंटेन 25% डेटा यहाँ पे, 25% डेटा यहाँ पे, 25% डेटा यहाँ पे, 25% डेटा यहाँ पे. लेट्स से दिस इज योर टॉप एंड ऑफ द डेटा सेट, जो भी वैल्यू है, और ये इसका लोअर एंड है. इनकम, एज, मार्क्स, वट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, कैन यू टेल मी ये जो ग्रीन एरो है, what is this representing? What is this green line representing? What is this green line representing? Bolo? The middlemost value between the higher and lower. So what is that middlemost value between higher and lower called? Median. 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 ये median है. ये देख लो ना, डेटा को अरेंज किया, 50% वैल्यू इससे ऊपर है, 50% वैल्यू इससे नीचे है. This is median. The green line is median. Okay, guys. अब ये जो चीज है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, कौन सा? परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मीडियन एंड दिस हॉरिजॉन्टल क्वार्टाइल फंक्शन, ये जो भी हमने पढ़ा है, दिस इज टुगेदर कॉल्ड एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. तो ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है. एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर एक लाइन होती है और उसकी मूछें होती हैं, विस्कर्स. ओके, अगर मैं इसके नीचे नंबर लाइन लगाऊं तो मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट एसएटी स्कोर 1520, और यहां पे मान लेते हैं या 1570 ले लेते हैं, यूटी का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर, और इसको ले लेते हैं 1080. ऐसे ही मैंने रैंडम ले लिया. लेट्स से मैं प्लॉट कर रहा हूं यूटी स्टूडेंट्स का स्कोर. ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कितना है? 1570. लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में यूटी स्टूडेंट्स ने एसएटी में 1600 में से कितना स्कोर किया? ये है 1570, ये है 1080. लेट्स से ये हम ले लेते हैं 1500, ये ले लेते हैं 1430. ये मैं ऐसी वैल्यूज लिख रहा हूं बस. एंड लेट्स से दिस इज 1300. तो इसका क्या मतलब है? ये देखो 4 पार्ट हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इनके 4 पार्ट है. ये जो मूछें हैं, ये नीचे का 25% है, ये उसके ऊपर 25% है, ये उसके ऊपर 25% है, और ये ऊपर वाली मूछें हैं, विस्कर्स, दिस इज टॉप 25%. Okay. Now if I ask you, what is the median score of UT students in SAT for last 3 attempts of SAT? क्या स्कोर है वो? 1430 मीडियन स्कोर है. Yes, correct. Where this part, guys, इसको बोलते हैं Q3, क्वार्टाइल 3. और ये वाले एज को, ये देखना मूछ नहीं है, ये एज बोल रहा हूं मैं. दिस इज Q3, थर्ड क्वार्टाइल. दिस इज कॉल्ड Q1, क्वार्टाइल 1. ये वाला जो एज है ना, नीचे से ऊपर 25 पर, नीचे से 25% के बाद, दिस एज इज कॉल्ड Q1, दिस एज इज कॉल्ड Q3. दिस इज योर टॉप विस्कर, दिस इज योर बॉटम विस्कर. मीडियन आपको पता चल गया. एंड यू नो इसमें Q2 दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज Q2 इज नथिंग बट मीडियन. करेक्ट. दिस इज, हाँ 1 मिनट में लेता हूं तुम्हारा क्वेश्चन. इन नटशेल दिस इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. A way to represent data, box and whisker plot. ये आएगा 9th चैप्टर में, मगर क्योंकि मैं तुम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, परसेंटाइल और क्वार्टाइल करवा रहा था, मैंने इसको एक साथ यहीं पे ले लिया. मैं इसको वापस ले लूंगा नेक्स्ट सेशन.
Charul, now you can go ahead with your question. Yes. अब बोलो, हाँ क्या? सर मुझे एक्चुअल में विस्कर क्या है वहाँ पे, वो लाइन और डॉट और द रेंज फ्रॉम 75। अच्छा, आई थॉट मैंने समझाया, मैं बताता हूँ क्या है। कहाँ गया? विस्कर मतलब होता है, कैट के विस्कर्स होते हैं ना, लॉयन की विस्कर्स होती है, मूछें। हाँ, विस्कर। कैट की विस्कर्स होती है ना, if you so what is happening is there is a box and the box has whisker. So these two lines, ये वाला part, this is form of a whisker. ये अमेरिकन थोड़े से फनी लोग होते हैं, वो नाम दे देते हैं हर चीज को, तो उन्होंने नाम दिया है इसको. So this is how you represent the data, but इसके नाम में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. This kind of data representation is called box and whisker plot. Okay, where this is, ये जो है 1500 to 1570, 25% of UT students are getting score between top 25%, 1500 to 1570. Next 25% scores are between 1430 to 1500. Next 25% scores are, अच्छा ये जरूरी नहीं ये बार मिडिल में हो, ये बॉक्स के किसी एंड पे भी हो सकता है, बट इट रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ स्टूडेंट. नीचे और 25% स्टूडेंट्स हैं जिनका 1340 में है. लास्ट 25% स्टूडेंट्स यूटी के 1080 से 1300 के बीच में. कैन यू सी दिस? ये समझ में आ गया है? नाउ माय क्वेश्चन टू दिस क्लास इज, मैं खुद को पहले वो करता हूँ, ये आपके सामने विस्कर है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है. गिव मी द एवरेज स्कोर, गिव मी द एवरेज स्कोर ऑफ यूटी स्टूडेंट्स from last 3 SAT scores. This box and whisker plot is given to you. What will be the average score of UT, mean score of UT students from last 3 SAT attempts? You want options? I can give you options. Scores of UT students, average mean score of UT students, mean score of UT students from last 3 SAT attempts. ये डेटा दिया हुआ है, give me the value. Shall I give you? हाँ? Charul, come again. सर डेटा आपका पेज नहीं दिख रहा है. अच्छा, अभी? हाँ. ठीक है, तुमको वहां पे खड़ा होना पड़ रहा है. अच्छा, तुम आगे भी तो बैठ सकती हो, एक बेंच और आगे बैठ सकती हो. I have got only one answer from Caleb till now. Guys, you want options? I'll go one by one. Charul, your value. What is the mean score of UT students, UT SAT students? 1430. 14, 30. Taradas? 1430. Caleb ने 1430 बोल ही दिया है. सानवी? The same 1430. Same 1430. Nishtha? So 1430 only. 1430. Kesar Patil? So 1325. 1325. Okay. You want to know the real answer? Because all of you are wrong here. Real answer is cannot be determined. Data insufficient. What did I ask you? I asked you what is the mean score? अरे मीन निकालोगे कैसे? ये तो मीडियन की वैल्यू दे रहे हो आप. आपको क्या पता कितने बच्चे हैं? मैंने बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो क्या आप इस डेटा से? नहीं, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते और आप इंडिविजुअल स्कोर नहीं निकाल सकते और उनको सम नहीं कर सकते. मीन होता है सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स.
है कि नहीं? यहाँ पे आपको मैंने ये बताया दैट देयर आर 25% स्टूडेंट्स हु आर अबव 1500, उसके बाद 25 आई हैव नॉट गिवन यू एनी मोर डेटा. मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द गिवन डेटा ऑन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. मीडियन बता सकते हो 1430 है. जो 50th परसेंटाइल पे बच्चा है उसका स्कोर 1430 है. मगर कितने बच्चे हैं और सब बच्चों का टोटल स्कोर क्या है, जब वही नहीं पता, न्यूमरेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर नहीं पता, तो एवरेज नहीं निकल सकता है ना. आंसर इज डेटा इज इनसफिशिएंट. चारुल कुमावत, समझ में आया? यस सर. ध्यान रखना, ये जो आप लोगों ने वैल्यू बताया है, ये तो वो बच्चा है जो मिडिल में खड़ा है. इसके ऊपर 50% बच्चे हैं बट नंबर नहीं पता, इसके नीचे 50% बच्चे हैं बट नंबर नहीं पता कितने बच्चे हैं और उनका स्कोर क्या है. तो मीन नहीं निकाला जा सकता बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से. एम आई क्लियर गाइस? Now in next class when we meet, we will do some problems based on box and whisker plot and we will test this concept further. अभी के लिए ये दो सवाल करो, last two problems for the day. Question on your screen. This is real SAT problem. I give you 2 full minutes. Please do this. Question number 19 from a book. Which of the following is true about data shown for these 21 days? City A, City B. Send me your answers privately. Okay, Caleb. Good. But we have still some time, Caleb. Why don't you read all 4 options once? All 4 options are talking about standard deviation, that is for sure. Kesar, very good. Correct, Sarah. Good. They are comparing standard deviation. This is real SAT, by the way. Nishta, correct. Comparing standard deviation of city A with city B. हाँ ठीक है चारुल, गुड. अच्छा, इसीलिए वो वहां बैठना ही चाहिए था तुमको, मैंने भी बाद में ध्यान दिया. तुम भी टाइप कर सकती हो फिर. चलो, हु इज लेफ्ट? सानवी आ गया क्या आंसर? नहीं, आई डोंट सी अ रिस्पॉन्स. सानवी, वेयर इज योर रिस्पॉन्स? Okay, so I'll do this now. इतना समय नहीं लगेगा इसमें. Table below gives distribution of high temperature in degree Fahrenheit for city A, city B over same 21 days in March. Which of the following is true? पहला वाला option. Standard deviation of temperature in city A is larger. This is standard deviation of A is larger. This is larger. Standard deviation of B is larger. मैं वो डेटा देख रहा हूँ साथ साथ में. So I don't know. Let's leave it like this. This is, sorry, ulta. Standard deviation of B is larger. Standard deviation of temperature in city A is same as city B. No way. If you look at the data table, there are 21 data points. And standard deviation of temperature in these cities cannot be calculated with the data provided. For sure, this is not the answer because you can compare and give the answer. Data insufficient to nahi hai. Let's look at the data. If you look at city A says temperature of 80 occurred thrice, temperature of 79 occurred 14 times, and then 78 2 times, 77 1 time, 76 1 time. So guys, if I have to plot this, मान लो ये इसका plot है. नहीं, यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं. Let me use this so that you guys will get an idea. ये देखना Caleb. Please have a look. How am I doing this? So Charul, you help me with the data. I'm going to my whiteboard and I'm trying to do a rough sketch.
So it is between 80, 79, 78. Bottom point क्या है? 76, right? Yes, sir. 78 कितनी बार आ रहा है? 78 3. कौन सा? 80 कितनी बार आ रहा है? 80 पे 3 आ रहा है. 79 14 times, something like this. 78, Times 77, 1, 76. 1. So if I find average of this, possibly average will be more closer to 79 than to any other value. But if you plot city B, this is the rough plot. Just to tell you, ये देखने से भी समझ में आ रहा है, but in case you are confused. 80 बोलो, 6, 79 बोलो, 3, 80, 2, sorry, not 80, 78, 77, 76. 6. So the average would be somewhere here. And if you look at this, the spread is more compared to spread across the mean in this. This is city A and this is B. So for sure, standard deviation of city A will be less than standard deviation of city B. ये आंसर होना चाहिए. Okay guys, अब वो कौन सा ऑप्शन है? Standard deviation of city B is more. Standard deviation of city B, answer is option B. Okay, last problem. Khan Academy level 4. 22 students in a health class. They conducted some experiment and measured the heartbeats before exercise and after exercise. रेंज भी कंपेयर करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी कंपेयर करना है. Okay, Caleb and Sarah, I've got your answers. Let's hold. Okay, Kesar. So, Sarah, what is the value for range? Because R1, R2 are range. What is the range? Sir, I got 32. 32 for before exercise. R1 is 32. Yes, sir. And What is R2? R2 also I got 32. R2 is also 32, which I think this requires, there's hardly any input or value addition that I can do. Highest minus the lowest value. So possible answers are either option A or option D, because B and C, R1 is not equal to R2 in B and C. Let's look at standard deviation. देखने से ही लग रहा है, this is more compact data. This data has more variability across mean. ज़्यादा variable है, तो standard deviation 1 will be less than standard deviation 2, but option A says they are equal. Option D says they are not equal, which is correct. Answer is option D. 112 minus 80. Yes, Caleb. Okay. Right, guys? So this was about standard deviation. When we meet next time, we will do some more problems on box and whisker plot. ये concept जो box and whisker plot का हमने किया है,
उसको प्लीज थोड़ा सा याद रखना। एक बार मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूं एंड देन आई विल रिवाइज इट व्हेन वी मीट अगेन। So we are talking about Q3, which is quartile 3, Q1, quartile 1 are these edges of the box, not edges of the whisker, edges of the box. ये बॉक्स के अंदर एक लाइन होती है, उसको मीडियन वाली लाइन बोलते हैं। रेंज वैसे ही निकालना है। मीन इज नॉट पॉसिबल ओनली फ्रॉम बॉक्स एंड whisker plot, you need additional information. That's all. 25, 25, 25, 25. I'll use same example and then we will go ahead and discuss box and whisker plot whenever we meet next time, which could be next Sunday or maybe Sunday after that. So thank you so much. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Jyoti, thank you. मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you. Bye.